fundamental rights, and we have completed our fundamental rights and part 3 of our Indian Constitution. So today we will be starting with directive principles of state policy. That covers part 4 of our Indian Constitution. Okay, so DPSP covers from Article 36 to Article 51. This you have to keep in mind. DPSP है हमारा part 4 Indian Constitution का, और part 4 में article है 36 से 51. Okay, so part 3 में we did fundamental rights, and this fundamental right cover article 12 to 35. 35 से next 36 to 51 is our DPSP, and then 51A will be our fundamental duties. This we will do in the upcoming classes. So today we'll be starting with directive principles of state policy. So what are DPSP? What are the directive principles of state policy? Very first thing that comes to our mind. See, DPSP directive principles, it states what? Directive principles. Certain principles that give direction to the state, in what manner it should formulate a law, in what manner it should make law so that it can help in improving the socio-economic condition of the country, in achieving socio-economic justice. Okay, we know that in fundamental rights tend to achieve what? It tends to achieve political justice. Fundamental rights help us in achieving what kind of justice? Political justice. But when it comes to directive principles of state policy, it helps us in achieving what? Socio and economic justice. Socio-economic justice. And this socio-economic justice, there is one more term that comes, and we call it socio-economic justice, is also known as distributive justice. Okay, so I remember there was a question and they were asked what is distributive justice. So distributive justice is what? It is socio and economic justice, social and economic justice. So as I've told you, these are certain guidelines, certain principles, keeping in mind the government formulates the law and implements the law. Okay, now in layman language we say that DPSP states that it is the duty of the state to follow the principle in matters of administration as well as lawmaking. We say that it is the duty of state to follow what? These principles in the matter of administration as well as lawmaking. This is what it says. Okay, so let's move to the very first point of our slide. It states that Article 36 to 51 under Part 4 deal with DPSP, Directive Principles of State Policy. So we have borrowed this from Ireland Constitution. Irish Constitution से हमने borrow किया है Directive Principles. Okay, as we know that our constitution is amalgamation of a lot of world's constitutions. So we have borrowed DPSP from which constitution? We have borrowed it from Irish Constitution. Next, DPSP are the ideals which are meant to be kept in mind by the state when it formulates what? The policy and enact laws. Same I have written over here. DPSP, what they are? They are certain ideals, certain principles that must be kept in the mind of state before formulating any kind of policy or enacting any kind of law. Next, Article 37 of Indian Constitution states about the application of directive principles of Indian directive principles का application जो है वो कहाँ पे mentioned है? In Article 37 of our Indian Constitution. These principles aimed at ensuring socio-economic justice to people and establishing India as a welfare state. I have told you what is a welfare state and what is a police state. Okay, so what it says, ये जो principles हैं ये क्या assure कर रहे हैं? ये ensure कर रहे हैं कि जो socio-economic justice है, ठीक है, वो achieve किया जाए. People should get socio-economic justice. Next,
And it also says that we should establish India as a welfare state. Now, directive principles are affirmative directions. On the other hand, fundamental rights are negative or prohibitive in nature. See, here is one thing. When we did fundamental rights, there was one of the postulates of fundamental rights that was given over there, and we have done it. It was that fundamental right acts as negative obligation on the state. But DPSP, it acts as a positive obligation. DPSP acts as a positive obligation. So DPSP, what they are? Affirmative direction. These are the positive directions, whereas fundamental rights are negative. Because they put limitations on the state. Fundamental rights में क्या है? State cannot violate. That's why we say that they act as what? They act as a negative obligation. But in DPSP, it states that DPSP acts as what? It acts as a positive obligation on the state. Okay, so this is what you have to keep in mind. Next thing it states, DPSP are not enforceable by law. It is non-justiciable. See, what does this statement mean? Fundamental right, if get violated, we can move to court. Okay, but if our DPSP get violated, we cannot move to court. This is what this means, that DPSP, they are not enforceable by law and non-justiciable. Okay, not enforceable by law, it means that when there is the law for implementation of fundamental rights, but when it comes to directive principles of state policy, they get enforceable through the legislative actions. Okay, through all the policies they formulate. There is not certain, we can say there is not certain provision. For example, if there is violation of fundamental rights, you have Article 32 and 226. Okay, for state Supreme Court and High Court. But when it comes to DPSP, they are not enforceable by law. Law do not enforce them. But fundamental rights are enforceable by law. We cannot move to court if a DPSP get violated, but we can move to court if fundamental right got violated. So this is what it states. Now, see, we classify DPSP on 3 principles. ठीक है, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स में हमारे पास 6 राइट्स है, उसी तरह से हमारे डीपीएसपी में भी 3 तरह की क्लासिफिकेशन होती है. अब वो 3 तरह की क्लासिफिकेशन क्या है? पहला है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल्स, एंड थर्ड इज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स. These are the 3 principles we have. ठीक है, तो what it states, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ओरिजिनली क्लासिफाई नहीं किया था डीपीएसपी को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट एंड डायरेक्शंस, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट एंड डायरेक्शंस हम उनको 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्लासिफिकेशन नहीं है. ठीक है, कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल कौन से हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स कौन से हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल कौन से हैं. ठीक है, तो ये तीनों प्रिंसिपल्स जो हैं ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. पर जिस तरह का हमारा डीपीएसपी, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्रिंसिपल है जो गांधीयन आइडियोलॉजीज पे बेस्ड है, गांधी की आइडियोलॉजीज पे बेस्ड है, देन हम उसको गांधीयन प्रिंसिपल्स में क्लासिफाई करते हैं. सिमिलरली अगर कोई ऐसा है जो वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो हम उसको सोशलिस्ट में क्लासिफाई करेंगे. नेक्स्ट, अगर कुछ ऐसा है जो कि लिबरल आइडियोलॉजीज पे बेस्ड है, देन हम उसे लिबरल इंटेलेक्चुअल में क्लासिफाई करेंगे. तो ये क्राइटेरिया है जिस बेसिस पे हम इनको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, सो व्हाट डज डीपीएसपी स्टेट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, उसमें ओरिजिनली क्लासिफिकेशन गिवन नहीं है, पर ऑन द बेसिस ऑफ कि किस प्रिंसिपल का क्या कंटेंट है, उसमें क्या पूछा गया है, उसके अंदर क्या दिया गया है, उस बेसिस पे हम उसे क्लासिफाई करेंगे. So the very first thing we have over here is what? First is socialistic principles.
तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स देखो कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, हमें पता है सोशलिस्टिक मतलब जिसमें किसके आइडियोलॉजी हो, सोशलिज्म। सोशलिज्म में हमारे पास क्या आता है, सोशलिज्म में हमारे पास आता है वेलफेयर स्टेट, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। एंड नेक्स्ट थिंग हमने यहाँ पे एक और पढ़ी थी जब हमने टर्म डिस्कस किया था, फिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, तो जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं जो इनमें से किसी एक आइडिया के ऊपर है, ठीक है, वेदर वो इट इज ऑन वेलफेयर स्टेट, वेदर इट इज ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी एंड वेदर इट इज ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हम उसे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में क्लासिफाई करते हैं। नाउ नेक्स्ट कम गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधीयन प्रिंसिपल्स वो हैं जो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। इसकी आइडियोलॉजी पे बेस्ड है महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी ने कुछ चीजें बोली थी, फॉर एग्जाम्पल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ खादी इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल है, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्लॉटरिंग ऑफ काउ, शुड नॉट स्लॉटरिंग ऑफ काउ, प्रोहिबिट स्लॉटरिंग ऑफ काउस। ये सब क्या है, ये सब महात्मा गांधी की आइडियोलॉजीज थी, महात्मा गांधी बिलीव करते थे इन सब चीजों में। ठीक है, तो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं जो इन प्रिंसिपल्स की लाइंस पे हैं उनको हम महात्मा गांधी के गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंडर इंक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। अब लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में क्या आएगा हमारे पास, सी, जब लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स है हमारे पास, उसमें हम वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स इंक्लूड करते हैं जो पहले तो इन दोनों में नहीं, वेरी फर्स्ट थिंग इज, एंड नेक्स्ट थिंग इज जो एक लिबरल आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट, इंटरनेशनल पीस, ये सब हम किसमें इंक्लूड कर देते हैं, ये सब हमारे इंक्लूड हो जाता है इन तीनों लिबरल इंटेलेक्चुअल्स। So this is how we classify them. What you have to do, what is your duty? The very first thing is that you have to do is, I have written these in the form of कि कौन से principle किसके अंडर है, ठीक है, कौन सा article किस principle के अंडर है. You have to make a chart like this. Write socialist, write Gandhian, and write liberal. This is how you have to write, and then write the principle and in bracket write the article. This is the very easy form of learning. Next, whenever there is an amendment, there what you will do, for example यहाँ पे हमारे पास है 44th amendment है, ठीक है, 44th amendment है, और आपने वो प्रिंसिपल लिखा, बगल में जहाँ पे इसका आर्टिकल लिखोगे ना उसी की साइड में आप लिख दो 44th amendment. This is how you have to keep in mind. Now, what kind of questions will be framed from this? Before starting, let's discuss that also. So, जो questions इसमें से frame होंगे, the very first question it will be, the first kind of question will be match articles का. Article 37 क्या है, Article 38 क्या है, Article 39 क्या है. Second, classification. Identify which of the following are Gandhian principles. Okay, which of the following DPSP talks about Gandhian ideologies. Second goes classification. Third goes कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा, स्टेटमेंट दे दी होगी और आपको नीचे 5 आर्टिकल्स दिए होंगे, this 1, 2, 3 and 4. ठीक है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 39, आर्टिकल 40, आर्टिकल 42 एंड 43. And there will be a statement कि slaughtering of cows का जो prohibition है वो इनमें से किस आर्टिकल के अंडर किया होगा. These are the type of question you can expect. Next, I have told you the very basic question जो हमारे पीछे वाली स्लाइड में फॉर्म हुआ है. What it is? Very first is distributive justice. I have told you. Next thing it states is कहाँ से हमने borrow किया है, कौन से पार्ट में है और कौन से आर्टिकल को कवर करता है. This is next thing that you have to keep in mind. Now, directive based on socialist principle. Very first thing, socialist principle पे पढ़ेंगे कौन कौन से directive based है. First comes article 38. Article 38 क्या बोलता है हमारा,
The state shall strive to promote the welfare of people by securing and protecting a social order, by ensuring social, economic and political justice. Article 38 in layman languages, जहाँ पे आप ये चार्ट बना के लिखोगे, write down ensure social, economic, political justice. And what it do? Minimize inequality. तो आर्टिकल 38 बोल रहा है कि स्टेट को क्या प्रमोट करना चाहिए, वेलफेयर प्रमोट करना चाहिए लोगों का, बाय कैसे सिक्योर करके और क्या प्रोटेक्ट करके, सोशल ऑर्डर को प्रोटेक्ट करके, बाय इंश्योरिंग व्हाट, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, और इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करके. अब इनइक्वालिटीज किस किस चीज में हो सकती है? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, इनइक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इनइक्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी. इन सब में इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करके स्टेट को इंश्योर करना चाहिए सोशल, इकोनॉमिक एंड political justice. Now, this is Article 38. Now comes to Article 39. Article 39 states that state shall in particular direct its policies towards. State को in particular अपनी policies को कहाँ direct करना चाहिए? First is right to an adequate means of livelihood to all the citizens. एक adequate means of livelihood होना चाहिए हर citizen के पास उस state पे. Next. The ownership and control of material resources shall be organized in a manner to serve the common good. जो ownership हो और जो control हो material resources का, वो उस manner में organized हो कि वो एक greater good को serve करे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये एक person है, इसी के पास सारी की सारी properties है, जितने भी public places है, सबकी ownership हो और इसी के पास ही सारे material resources का control हो. ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो concentration of wealth हो जाएगी. और हमारा प्रिंसिपल क्या बेस करता है? सोशलिस्ट. तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, दे आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर. नाउ इट स्टेट्स दैट स्टेट शैल अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स. कुछ ही हैंड्स में जो वेल्थ कंसंट्रेशन है वो स्टेट को अवॉइड करना है. नेक्स्ट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इसके लिए आया था इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट. There was this act known as Equal Remuneration Act for equal pay for both men and women. We also use this while writing any kind of answer. अगर हम कोई essay या फिर कोई topic लिख रहे हैं जहाँ पे women empowerment की बात हो रही है, we also write Equal Remuneration Act. So you can mention over here कि ऐसा नहीं है कि अगर वो एक पर्टिकुलर काम है, जैसे कि कोई फैक्ट्री में कोई मैनेजर है और वो अगर कोई लेडी है तो उसकी सैलरी आप कर दोगे 27,000, बट अगर वही कोई मेल है तो उसको 40,000 मिल रहा है. सो इट शुड नॉट बी देयर. अगर देयर इज इक्वल वर्क देन देयर शुड बी व्हाट? देयर शुड बी इक्वल पे. नेक्स्ट कम्स प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स. स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स, देयर शुड बी व्हाट? देयर शुड बी प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स. Now, इसके लिए बहुत सारे फैक्ट्री एक्ट्स आए हैं हमारे पास. नेक्स्ट, चाइल्ड एंड यूथ शैल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड. चाइल्ड और यूथ का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए. दिस इज व्हाट दिस स्टेट्स. सो आर्टिकल 39 के अंदर हमारे पास ये 5 पॉइंट्स हैं. ठीक है, वी हैव दीस 6 पॉइंट्स इन आर्टिकल 39 एंड यू हैव टू कीप इन माइंड. सो व्हेन यू विल बी राइटिंग आर्टिकल 39 in socialistic principles, write down the highlighted part. Ownership and control, avoid concentration, equal pay, health and strength, childhood and youth. Just write down in block in some of the dotted points I'll say, so that it will help you keep in remembering. Okay, now Article 39 के बाद आता है Article 41. Okay, Article 41, what does it states? It states that to secure the right to work, to education and to public assistance. Right to work, to secure the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disability. If you are unemployed, if you are old age, if you are sick and you have any kind of disability, then Article 41 says to secure the right to work, you have a right to work, right to get education and to public assistance in all these cases. Okay,
Now, Article 42. What Article 42 states? Article 42 states the state shall make provision for securing just and humane condition for work and for maternity relief. There should be what? There should be a humane condition for work and there should be maternity relief. Maternity relief is for pregnant women. Okay. So वहां पे क्या होना चाहिए? ह्यूमेन कंडीशन होना चाहिए जहां पे कोई पर्सन काम कर पाए. एंड नेक्स्ट थिंग इज मटर्निटी रिलीफ होना चाहिए. देयर इज दिस ब्रांच एग्रोनॉमिक्स. In agronomics we study all the conditions and all the, we'll say, the proper environment that is required by a worker to work at any kind of place. So there's a new term for you, agronomics. Now, next comes Article 43. Article 43 states the state shall endeavor to secure all workers a living wage and decent standard of life. क्या secure करना चाहिए? लिविंग वेज, जिंदा रहने के लिए जितने पैसे इंपॉर्टेंट है, एंड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट 43A. 43A states what? State shall take steps to secure the participation of worker in the management of industry. State को क्या करना चाहिए? Steps लेना चाहिए. क्या secure करने के लिए? Worker का participation किसके अंदर? Management of industries के अंदर. Next, Article 47 states what? To raise the level of nutrition and the standard of living of people and to improve public health. State can raise the level of nutrition, should take steps to raise the level of nutrition and standard of living of people and improve public health. So this is what we have in our socialist principles. Next आते हैं Gandhian principles. अब Gandhian principles all which are based on whose? Gandhi's ideologies. Beliefs, Gandhi की ideology और उसके beliefs पे जो based है, all these are the Gandhian principles. So Gandhian principle में first we have Article 40. Article 40 states what? State shall take steps to organize village panchayats as a units of self-government. State को क्या करना चाहिए? Steps लेना चाहिए. क्या organize करने के लिए? Village panchayat organize करने के लिए. And next thing what it should do? As a unit of self-government. अब जो self-government है, we know that there is what? There is union government at center, state government at state, and at lower levels are panchayats. Okay. So ये village panchayat को promote करने की बात करते हैं. Gandhi ji was always he was always into bottom to top approach. Okay. कि पहले पंचायत हो फिर ब्लॉक्स हो, उस बेसिस पे फंक्शन करे. सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करने के लिए there should be what? There should be village panchayats in every village. Article 43. 43 क्या एंडेवर करता है? प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का प्रमोशन ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज. कहाँ पे? रूरल एरियाज में स्मॉल स्केल या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहिए. Article 43B. Article 43B states what? To promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative societies. What does this 43B states? It states promotion of voluntary formation and autonomous functioning, democratic control and management of cooperative societies. जो जितनी भी cooperative societies है, ठीक है, उनका क्या होना चाहिए? They should function voluntarily. They have autonomous functioning. Okay, उनके ऊपर कोई control नहीं हो. They have a democratic control and professional management होना चाहिए. Next, Article 46. 46 states that states shall promote educational and economic interest of the weaker section of the society. Ab Gandhi ji gave the term to the depressed class. When you will study INM at that point of time, you will know he gave the term Harijan. People who are close to the heart of Harijan. Okay, so that is the name they gave them. So Article 46 में क्या लिखा है? Weaker sections का promotion कैसे educationally and economically. किस particular section के? Scheduled caste, scheduled tribe and other weaker sections.
शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब्स में और बाकी वीकर सेक्शंस में स्टेट को क्या करना चाहिए, स्टेट को प्रमोट करना चाहिए एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। Next comes Article 47. Article 47 states that state shall take steps to improve public health, prohibit consumption of intoxicating drinks, drugs that are injurious to health. तो आर्टिकल 47 बोल रहा है कि स्टेट को स्टेप्स लेने चाहिए क्या इंप्रूव करने के लिए, पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, और उससे क्या प्रोहिबिट करे वो, कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ड्रग्स दैट आर इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, अब देयर वाज अ न्यूज, यू नो मेनी टाइम्स वी सी इन न्यूज कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग ऑफ दिस एल्कोहल। तो देयर इज दिस एक वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज कच्चा शराब जो हम यूज करते हैं। सो मेनी पीपल व्हाट दे व्हेन दे ड्रिंक इट, इट इज वेरी इंजूरियस टू हेल्थ। सो देयर वाज मेनी, इट वाज अ टाइम कि जब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ वहां पे एक पर्टिकुलर जगह पे वहां पे क्या हो रहा था, there was a village and people was so much into, as you know that people are so much into drinks and drugs these days, so they, I think 7 to 8 men drink that and they passed away. So article 47 states what, he state so sorry for that, स्टेट को स्टेप्स लेने चाहिए क्या इंप्रूव करने के लिए, पब्लिक हेल्थ, और क्या प्रोहिबिट करने के लिए, कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, जो बॉडी के लिए बिल्कुल क्या है हमारी हार्मफुल है। स्टेट को स्टेप्स लेने चाहिए ऐसे ड्रग्स को और ड्रिंक्स को प्रोहिबिट करने के लिए, उनका कंजम्पशन, और पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। Now, Article 49 states to prohibit the slaughter of cows, calves, and other milch and brought cattle to improve their breeds. Slaughter of cows, calves और बाकी milch animals, बाकी milk producing animals, उन सबका क्या करना चाहिए, उनका स्लॉटर को प्रोहिबिट कर देना चाहिए। ठीक है, एंड उनकी जो ब्रीड्स हैं उनको इंप्रूव करना चाहिए। These are the Gandhian principles. Now, let's move forward to the liberal intellectual principles. Okay. Liberal intellectual principles. Article 44. State shall endeavor to secure all of its citizens the uniform civil code throughout the country. Uniform civil code throughout the country. Article 44. Article 44 बोलता है there should be a uniform civil code throughout the country. ठीक है. Next. Article 45. Article 45 states to provide early childhood care and education for children until they complete the age of 6 years. Early childhood care provide करना, ठीक है, education is 6 to 14. 6 to 14 में हम education provide करते हैं, early childhood care provide करते हैं until they complete the age of 6 years. Article 48 states to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines. Agriculture और animal husbandry को हमको क्या करना है, modern और scientific lines पे organize करना है। इसी में हमारे पास सब क्लॉज है 48A. 48A states to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. We have to improve the environment, we have to protect the environment, and we have to safeguard the forest and wildlife of our country. Now, Article 49. 49 states that states shall protect every monument or a place of artistic or historic interest. स्टेट को क्या करना है, एवरी मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और कोई भी प्लेस जो कि किसी आर्ट फॉर्म में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो या फिर हिस्टोरिकल उसकी कोई इंपॉर्टेंस हो, तो स्टेट को क्या करना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। आर्टिकल 50 states state shall take steps to separate judiciary from executive in public services of the state. Judiciary from executive, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करना है, किसकी ड्यूटी है, स्टेट की। स्टेट शैल टेक स्टेप्स कि वो जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेटली फंक्शन करने दे, कहाँ पे, इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ स्टेट। नाउ आर्टिकल 51 states it declares to establish international peace and security. 51 talks about international peace and security. स्टेट को क्या एस्टैब्लिश करना है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। द स्टेट शैल एंडेवर्स टू, स्टेट को क्या मेंटेन रखना है, ऑनरेबल रिलेशन विद द नेशंस,
foster respect for international law and treaty obligations, encourage settlement and international dispute by arbitration. ठीक है, अब देखो स्टेट को ऑनरेबल रिलेशन मेंटेन करने हैं अपने बाकी नेशंस के साथ, इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटीज की रिस्पेक्ट करनी है, और एनकरेज करना है डिस्प्यूट सेटलमेंट को, जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटअप कर लो रादर देन गोइंग फॉर वॉर। यहाँ पे सेटलमेंट का ऑप्शन ही नहीं। नाउ वी हैव सर्टेन अदर इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ डीपीएसपी। वेरी फर्स्ट थिंग हमारे पास देखो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी में हम क्या पढ़ेंगे कि क्या क्या एक्ट्स बनाए गए थे या फिर क्या क्या लॉज पास किए गए थे, क्या करने के लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है हमारे पास लैंड रिफॉर्म्स। अब हमें पता है जब हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस लैंड वाज व्हाट कंसंट्रेटेड फॉर्म में था, देन लैंड रिफॉर्म्स वर पास्ड एंड दे आर करंटली इन शेड्यूल 9। ठीक है, 9 शेड्यूल में है हमारे। लैंड रिफॉर्म्स ने क्या किया था, ये जो जमींदारी सिस्टम था ना, और जितने भी इंटरमीडिएटरीज थे, फॉर एग्जांपल इनामदार, जागीरदार, इन सबको एबॉलिश कर दिया था। ठीक है, उसके बाद टेनेंसी रिफॉर्म्स को सिक्योर किया था, इतने टाइम के लिए होना चाहिए, फेयर रेंट होना चाहिए, ये सारे के सारे हमारे लैंड रिफॉर्म्स का पार्ट। तो लैंड रिफॉर्म्स में क्या हुआ था, state have passed land reforms to bring changes in agrarian society and to improve the condition of rural masses। agrarian society में changes लाने के लिए और rural masses को क्या करने के लिए, उनकी conditions को improve करने के लिए state ने क्या पास किया था, land reform। now abolition of intermediaries, abolition of intermediaries में जमींदार, जागीरदार, इनामदार, इन सबको abolish कर दिया गया था। नेक्स्ट टेनेंसी रिफॉर्म्स में क्या था, देयर वाज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फेयर रेंट, ये सब हमारा किसमें है, टेनेंसी रिफॉर्म्स के थ्रू आया था। लेबर रिफॉर्म में, लेबर रिफॉर्म में ये कुछ पर्टिकुलर एक्ट्स थे, जैसे कि मिनिमम वेज एक्ट, कि अगर आप एक काम कर रहे हो तो उसके लिए मिनिमम वेज सेट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एंड इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, ये सब क्या किए थे, पास किए गए थे विमेन वर्कर्स के लिए, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज क्रेज सिस्टम भी अभी इंट्रोड्यूस किया गया था, कि अगर एक कंपनी में 30 लेडीज वर्क कर रही हैं, देन देयर मस्ट बी अ क्रेज सिस्टम where they can leave their kids for free. So Maternity Benefit Act 1961 was there. Remuneration Act, equal remuneration, both male and female should get equal pay for equal work. ये Equal Remuneration Act भी था वहां पे। उसके बाद Child Labor Prohibition and Regulation Act है, जो हमने पढ़ा था कि चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड। कहाँ पे प्रोहिबिट था हमारा चाइल्ड लेबर, इन डेंजरस फैक्ट्रीज, इन हजार्डस फैक्ट्रीज। ठीक है, नाउ कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट पंचायती राज सिस्टम, हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 1992 का, उससे हमारा आर्टिकल 40 सेटअप हुआ, और आर्टिकल 40 में हमारे क्या है, पंचायती राज सिस्टम। So it got established by a Constitution Amendment Act, that is 73rd Constitution Amendment Act. Next comes cottage industry. अब कॉटेज इंडस्ट्री जो है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत सारी चीजें फॉर्म हुई थी, जैसे कि KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड, सिल्क बोर्ड, all these are what, all these were set up for promotion of कॉटेज इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, सारे बोर्ड्स जो है ये कॉटेज इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए सेटअप किए गए थे। अब आया हमारा राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन के लिए हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, जिसमें 21 क्लॉज ऐड हुआ था हमारा। इसमें 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया था देयर शुड बी व्हाट, कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चाइल्ड ऑफ 6 to 14 years of old। ठीक है, तो एजुकेशन के लिए हमारा 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था। विलेज अपलिफ्टमेंट के लिए भी कैसे पंचायती राज सिस्टम एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज आई थी। सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ऐसे अलग अलग फॉर्म्स में हमारी इम्प्लीमेंटेशन होती है। ओके, टुमारो वी विल स्टार्ट विद ऑल द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में की थी, एंड विद दैट we will conclude our lecture with some questions. That's all for our today's class. If you guys have any doubt with respect to this, then please let me know down in the comment section and I'll respond on the same. And tomorrow we will keep a question series of this as well as of fundamental rights, some extended questions.
That's all for today. I'll see you guys tomorrow at the same time, that is 10 a.m.